फोर्स का नाम होता है टॉर्क। क्या? टॉर्क। आज का डेट कितना है बेटा? वेरी गुड, 13 तारीख हो गया। अब एग्जाम स्टार्ट होने में हमारे कितने दिन बाकी हैं? और हमारे चैप्टर्स अभी तक बिल्कुल नहीं प्रिपेयर हुए हैं, एंड वी आर येट हैप्पी। नहीं बेटा, अभी फिलहाल मेरा इंटरेस्ट सिर्फ क्लास में है। तेरे बर्थडे के अनाउंसमेंट में बिल्कुल नहीं है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या द फोर्स। कुछ पढ़ा लूं क्या, या क्लास बंद कर दूं? 11:30। मोमेंट ऑफ फोर्स और द थर्ड थिंग इज टॉर्क। ये तीनों नाम एक ही चीज के होते हैं और इनका इफेक्ट होता है टू रोटेट अ बॉडी। ठीक है, इन ये तीनों एक ही इंसान के नाम है या एक ही प्रॉपर्टी। और टॉर्क का यूनिट होता है? सबका यूनिट होता है बेटा, और सबका एक ही यूनिट होता है। क्या है वो? न्यूटन मीटर। ओके। न्यूटन मीटर मतलब वर्क। वर्क का यूनिट जूल होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है। ठीक है, गलती से भी मत लिखना, नहीं तो पेपर फाड़ के हाथ में दे दिया जाएगा। ओके, कैन वी वेट? हाँ, अच्छा बोलो। पता नहीं बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी डिलीवर्ड अपॉन टाइम। बट ये पावर अभी यहाँ पर क्यों आया? वेरी गुड। हाँ, इसका वर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट? इट लीड्स टू, राइट, इट लीड्स टू rotation of a body about an axis। ठीक है, सो सपोज ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, इसको किसी एक पॉइंट पर हमने हिंज कर रखा है, ठीक है, एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी। फोर्स अगर मैं इस तरफ अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉडी कैसे घूमेगा? इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अगर मैं ब्लू फोर्स इस तरफ से लगाता हूं तो फिर बॉडी किधर घूमेगा? ठीक है, इट विल, सॉरी, गलत जगह से लगा दिया। ठीक है, इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। अगर मैं रेड फोर्स यहां से लगाता हूं, ये फोर्स लगाऊंगा तो ये वापस से ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, क्या ब्लू वाला? इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा। क्या प्रॉब्लम है? इसको पकड़ा, इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इधर घूमेगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इधर घूमेगा। प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ से पकड़ा हुआ ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो फिर से ये इधर घूमेगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर घूमेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी, इसमें हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होता है, वॉट एवर फोर्स वी आर अप्लाइंग, द लाइन ऑफ फोर्स। पेंसिल चाहिए? हाँ तो मांग लो ना। किसके पास?
Okay. If the line of action, see, if we are applying a force like this, the direction of application of force is also known as line of action of force. ठीक है? Direction of application of force is equal to line of action of force. Direction, सुन रहे हैं हम लोग बात को? Direction of application of force is same as line of action of force. ठीक है बेटा, इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यूज को इक्वल करने के लिए होता है. इज सेम एज बोला तो सुनता नहीं है. बोला था ना मैंने, इज सेम एज. हाँ तो फिर सुने क्यों नहीं? क्लास में बैठे हो ना. मुझे लगा ऐसे ही बोला का मतलब कुछ और होगा. बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम लोग क्लास में. ओके. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए द फोर्स must the direction of application of force or line of action of force must not be passing through the axis of rotation. Are we getting this point? Key point क्या है? The line of action of force, line of action of force must not pass through the axis of rotation. ठीक है. अगर पास करता है तो क्या होगा? Else this force will not have will not have any turning effect. Are we getting this point? If the line of action of force is passing through, or if the line of action of force passes through the axis of rotation, then that force will not have any turning effect or rotating ability. The line of action of force must not pass through axis of rotation in order to have some rotating effect. If you want some rotating effect to be present when you are applying some force, the force must not, the direction of application of force must not pass through the axis of rotation. ठीक है? If it is passing, if the line of action of force is passing through the axis of rotation, then you will not have any rotation. Is that okay? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ. वेट, 2 सेंटेंस कर देता हूँ. Pass through the axis of rotation. नहीं, हाँ ये वाला को in order to have turning if the
line of action force दूसरा पॉइंट passes हाँ दूसरा पॉइंट हाँ भाई उस पॉइंट पर जो पार्ट वो नीचे है ठीक है। Moment of force is equal to force multiplied by perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force. Is that okay? अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पर मान लो हमारा ये एक ब्लैक कलर का फोर्स है which is being applied like this. ये फोर्स अल्टीमेटली अगर इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, इट इज लुकिंग लाइक दैट इट विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इज दैट ओके? तो ये इट विल नॉट बी एबल टू रोटेट दिस बॉडी. इज दैट ओके? बाकी सारे जो है वो रोटेट करेंगे. हाँ बेटा तुमको दिख रहा है, बस बाकी लोगों को पता नहीं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो ऊपर से करेंगे. क्या ऊपर से करेंगे. क्या कर रहे हैं? ऊपर से तुम रुकोगे, मैं बोल रहा हूँ सुनोगे, नहीं तो अपनी बुद्धि लगाओ और वहीं लिखना. क्या हुआ? अरे नीचे को छोड़ो, तुम ऊपर की चीज जो समझा रहा हो वो समझो, उसको बाद में लिखना. वो एनीवे पीडीएफ जाएगा घर पर, उसको नोट कर लेना. मैं समझाने के लिए घर पे नहीं आऊंगा ना. So what I am saying is, अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड करोगे? फोर्स जो लगा रहे हो उसको एक्सटेंड करते हैं हम आगे तक. ठीक है. अब ये अगर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करने लगेगा, देन दैट फोर्स विल नॉट हैव एनी टर्निंग इफेक्ट. ठीक है. बाकी के फोर्सेस जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहे हैं, उन सबके केस में क्या होगा? there will be some minimum distance between the axis of rotation and the line of application of force. Is that okay? ये डिस्टेंस यहां पर मान लो x1 है. रेड वाले के केस में ये क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी मे बी x2. ग्रीन वाले के केस में क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू x3. इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यहां से इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे. पॉइंट से डालना. हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही हर बार लाइन ऑफ एक्शन पे आपको परपेंडिकुलर डालना है. ठीक है. और डिस्टेंस कौन सा लेंगे? हाँ, तुम उधर देखो, तुम इधर मत सुनो. वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है ना. x3. ठीक है. From axis of rotation you have to draw a perpendicular on the line of action of force. If that perpendicular distance, अगर वो पास नहीं कर रहा है तो उस perpendicular distance की कुछ वैल्यू होएगी, और अगर वो पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से
So the distance between axis of rotation and line of action of force will be 0, right? And चूंकि 0 distance होता है इसलिए moment of force जो होगा that will become 0. Are we getting this point? And therefore no turning effect. ठीक है? अगर if there is a distance, I mean there is some perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force, then the turning effect or moment of any given force will be non-zero, and that force will have some rotational ability or turning effect. Are we getting this point? Okay, दूसरी चीज, अगर मैं सेम फोर्स, ये फोर्स यहां पर लगा रहा हूं और डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance from axis of rotation and line of action of force x3 है, और यही फोर्स मैं यहां पर लगा रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x1 which is smaller than x3. Considering the force to be equal, still this force 1 will have greater moment than force 2. That means the moment of force is going to be dependent on the perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force. If we are keeping the force constant but we are changing the line of action of force, the axis of the distance between axis of rotation and line of action of force is going to change, and thereby the turning effect may increase or decrease accordingly. That means it will change at least. Is that okay? Are we getting this point? Okay. अभी नट बोल्ट में हम जनरली स्पैनर लेकर के ओपन करते हैं उसको, स्पैनर पता है ना? हाँ, गाड़ी वगैरह के नट बोल्ट खोलते हुए एक रिंच टाइप की चीज देखते हो, रिंच जनरली उसको बोलते हैं स्पैनर. सो स्पैनर को अगर बहुत ज्यादा क्लोज टू द नट बोल्ट पकड़ के हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, वी विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड. वेयर एज अगर बहुत टाइटली भी बंद है तो मेनी टाइम्स करते क्या है, जैसे ट्रक वगैरह का नट बोल्ट जब ओपन करना होता है तो बिकॉज ऑफ जैमिंग एंड ऑल वो जनरली खुलने, हाँ बोलो. नहीं, मशीन हर जगह नहीं यूज करते हैं, हाथ से भी ओपन करते हैं. सो व्हाट दे डू इज नॉर्मल सा स्पैनर लगा देते हैं वो, और उसके दूसरे एंड पर भी एक होल रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें वो कुछ एक लंबा डंडा लगा लेते हैं और उससे उस पर प्रेशर लगाते हैं. सो बेसिकली क्या हो गया, वो जो फोर्स लगाते हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं. तो इवन स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स इज कैपेबल ऑफ ओपनिंग इट. ठीक है, अगर स्पैनर के लेंथ से लगा रहे होते तो दे वुड हैव टू अप्लाई अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू ओपन इट, या फिर मशीन की जरूरत पड़ती. बट हर जगह जरूरी नहीं है कि मशीन अवेलेबल हो, अगर गैरेज में नहीं हो तो मशीन रहेगी नहीं आपके पास. ठीक है, रोड पर अगर ओपन करना हुआ तो इस तरह का जुगाड़ लगा करके हम उसको ओपन कर लेते हैं. इज दैट ओके? वेरी गुड. अभी पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट कर लिया हम लोगों ने? एक मिनट सर. We have read above that if a force is applied on a stationary rigid body, it starts moving in a straight line in the direction of force as shown in figure 32 3.2.
In figure 3.2, a ball moves. हेलो हेलो हाँ गोल लगा हाँ गोल लगा बोली हाँ पिक कर लीजिए axis of rotation the axis about which a body rotates when a force force whose line of action does not pass through this axis is applied on this body. ठीक है axis of rotation the axis about which a body rotates when a force whose line of action does not pass through this axis is applied on this body. Is that okay? In figure 3.3 on pushing the wheel begins to turn about its pivoted point O. Similarly, when a handle of a door is either pushed or pulled, the door begins to turn about the hinges which hold the door at rest. Thus, a force, push or pull, has a turning effect on a body which is not free to move in a straight line but is pivoted at a point about which it can turn. Can we underline this? A force has a turning effect on a body. उसके लिए दो conditions क्या क्या है? A force will have a turning effect. A force will have a turning effect on a body if number one, the body is not free to move in a straight line and rather pivoted at the point. And second is the line of action of force, the line of action of applied force must not pass through
is pivoted point. Factors affecting the turning effect of the body. There are two factors. What are they? First, the amount of force. Sorry, beta. किसके? हाँ बेटा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के, ठीक है, और चलो थोड़ा ऊपर। हाँ। लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंस है, इसको हम ना भूलें। अगर ये याद रहेगा तो हमको समझ में आता रहेगा कि दोनों अलग अलग हैं, नहीं तो बाकी तो एक लग ही रहे हैं। और यूनिट भी जोड़ जाड़ करके हमने देख ही लिया है सर। जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है और इसका न्यूटन मीटर ही है। स्तव्य ने उसकी अंदर की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। उसकी आवाज नहीं सुनता। नोट हो गया? Very good. What are the factors which are going to affect the moment of force? Number one, the magnitude of the force, and second, perpendicular distance between line of action of force and the pivoted point. ठीक है, वेरी गुड, लिख लेते हैं। Factors affecting the moment of force or turning effect of force. Number one, magnitude magnitude of applied force, दूसरा perpendicular distance between line of action of the force pivoted point. Is that okay? So कैसे कैसे ये दोनों बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? ये भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ये भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ये बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज होगा, ये भी बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होएगा, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। क्या पिछले पेज पे लिखवा है ना बेटा? हाँ तो सेम ही माना अपन सर ने अभी पता है। Some examples in daily life: to open or shut a door, we apply a force or F normal to the door at its handle P, which is provided at the maximum distance from the hinges as shown in the figure. We can notice that if we apply the force at a point Q near the hinge, much greater force is required to open the door, and if the force is applied at the hinge R, we will not be able to open the door howsoever large the force may be. Thus, the handle P is
provided near the free end of the door so that a smaller force at a larger perpendicular distance produces the required turning effect of the force to open or shut the door. The upper circular stone A of a hand floor grounder is provided with a handle edge near its rim, that is at a maximum distance from the center so that it can easily be rotated about the iron pivot P at its center by applying a small force at the handle edge. So ऊपर वाला इसका जो है that circular this thing plate that grinds and it is free to rotate about the pivot iron का जो बार दिख रहा है pin axis. The lower circular base is static. The upper circular part rotates over the lower circular part and we have a handle to push the upper circular part. Is that okay? और फिर वो ग्राइंड करके हमको देता है आटा फ्लोर निकाल देता है फ्रॉम व्हीट. Okay. The potter's wheel has a wheel pivoted at the center. The potter turns the wheel by means of a stick at the rim of the wheel as shown in figure 3.6. So he uses a stick in order to rotate the wheel. Okay. And he puts that stick at the farthest point from the axis of rotation so that he can effectively rotate it, or with the same amount of force he can get a greater amount of rotation. A carpenter uses a drill machine which is provided with a handle so that by applying the less force at the end of the handle, the drill can be turned easily. To turn a steering wheel in a car or truck, the driver applies force at the point on the rim of the wheel as shown in figure 3.8. So we have these experiences. In a bicycle, to turn the wheel, the force is applied on the pedal so that the distance of force from the axle of wheel is increased. The spanner used to tighten or loosen a nut has a long handle to produce a large turning effect by a small force applied at the end of its handle, as shown in figure 3.10. Conclusion. From the above examples, we conclude that turning of a body about a pivot depends not only on the magnitude of force, but it also depends on the perpendicular distance of the force from the point of rotation. Larger the perpendicular distance, less is the force needed to turn the body. Actually, the turning effect on a body depends on the product of both the magnitude of force and perpendicular distance of the force from the pivoted point. This product is called moment of the force or torque. In other words, a body turns or rotates about pivoted point due to the moment of force. Moment of force का formal definition. Moment of force is said to be is equal to the product of magnitude of force and perpendicular distance of the force from pivoted point. They have taken this consideration and finally expressed the formula for moment of force about point O, force into perpendicular distance of force from the point O, that is pivoted point, F into OP. Note, for producing maximum turning effect on a body by a given force, the force is applied on the body at a point which is farthest from the axis of rotation. The force is applied on the body at a point for which perpendicular distance of the force from the pivoted point is maximum, so that given force may provide the maximum torque to turn the body. ठीक है? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर. अंडरलाइन कर लीजिए. SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इनटू मीटर. ब्लू और ग्रीन में लिखा हुआ है. CGS unit is dyne centimeter. पेज नंबर 42 नोट के अंदर में CGS यूनिट इज dyne centimeter. अंडरलाइन कर लीजिए. If it is used in gravitational unit, then it is going to be kilogram force, kgf into meter.
सीजीएस में लेंगे तो ग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर, जीएफ सीएम, ठीक है, और वो केजीएफ मीटर। इज दैट ओके? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर सीजीएस में ले रहे हैं तो, और एसआई के साथ ले रहे हैं तो केजीएफ मीटर, ठीक है। अब कन्वर्सन कैसे कैसे होगा, कन्वर्सन मैं बता देता हूं फटाफट। 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.01 kgf meter. Is that okay? This will be equal to 100 into 100 gram force centimeter, and this is also equal to 10 to the power 7 dyne centimeter, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर 0.1 kgf मीटर, 1 kgf मीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होगा, 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इज दैट ओके? बेटा न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन 10 to the power 5 का होता है, पहले बताया है मैंने, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 10 to the power 5 into 100 क्या हो जाएगा, 10 to the power 7, ठीक है। क्लियर है या लिख दूं? ठीक, हाँ पूछ लेता हूँ, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो लिख दूंगा, लिखने में कौन सा 2-4 घंटे जाने वाले हैं, ठीक है। इट्स 10 to the power 5 डाइन into 100 centimeter, that makes it 10 to the power 7 dyne centimeter. Clear? अच्छा यहाँ पर बेसिकली 9.8 का मल्टीप्लायर लिया हुआ है, मैंने 10 का मल्टीप्लायर ले लिया है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। अगर 9.8 का लेंगे तो चेंजेस हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग 10 का ही लेकर के चलते हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। is nearly 10. 1 kgf is 10 Newton meter. 9.8 Newton meter, that is almost 10 Newton meter. कहाँ पे 10 दिया हुआ है बेटा? हाँ, it is nearly 10, ठीक है। Reena has to apply a minimum force of 1.5 Newton on handle of the door of width 1.2 meter to open it. This means that minimum moment of force required to open the door is 1.5 Newton into 1.2 meter, that is 1.8 Newton meter. Now, if she wants to open the door, open it by applying the force at midpoint between the handle and the hinge. That means the distance will now become, the perpendicular distance will reduce to 0.6 meter. Therefore, she will have to increase or double her force, right? Very good. That is at a distance 0.6 meter from hinges, and she will have to apply a force F such that F into 0.6 should be equal to 1.2 into 1.5, that is 1.8. Therefore, force will be 1.8 divided by 0.6, that is 3 Newton. Thus, on decreasing the distance of applied force from the point of rotation, the magnitude of force increases. Is that okay? Yes. Very good. ये डू यू नो वाला पार्ट कर लेते हैं, प्रेशर वाला नेक्स्ट टाइम करेंगे। कन्वेंशनली, एक सेकेंड ये ध्यान से सुन लेना, कन्वेंशनली इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। That force will have anti-clockwise moment associated with it, and it is taken as positive, ठीक है। and उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं बेटा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, जैसे 5 न्यूटन मीटर है
and it is rotating the body in anti-clockwise direction, then या तो हम मेंशन करें 5 न्यूटन मीटर एंड एंटी क्लॉकवाइज, या फिर सिंपली हम +5 न्यूटन मीटर लिख लेंगे उसको, and that itself indicate that it is rotating the body in anti-clockwise direction, +5 न्यूटन मीटर। ठीक है। दूसरा चीज ये होता है, अगर 5 न्यूटन मीटर फोर्स, न्यूटन मीटर मोमेंट लगा रहे हैं, the body is rotating in clockwise direction। ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दैट मींस योर मोमेंट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। एंड इट विल हैव माइनस साइन, सो -5 न्यूटन मीटर लिखा हमने, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट योर moment of the force is clockwise and it is rotating the body in clockwise direction। is that clear? पॉजिटिव किसके साथ एसोसिएटेड होगा? एंटी क्लॉकवाइज के साथ। और निगेटिव किसके साथ एसोसिएटेड? वेरी गुड। इसको याद रखने के लिए इनकेस कभी भूल जाओ तो एक चीज याद रखना, ये जब हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा एंगल्स बढ़ता है। ठीक है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360। ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, यहां से या यहां से भी चालू करते हैं, तो हमारे एंगल्स घटते जाते हैं। 0 से -90, -980 से -180, -180 से -270, और ये -360 होता है। ये बात समझ में आ रही है? याद रहेगा? Yes. हाँ बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। सो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसके साथ एसोसिएटेड साइंस ध्यान रखेंगे हम लोग। इट्स वेरी मैंडेटरी, अभी से लेकर के 12वीं तक इसको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, सही सुन रहे हो। The direction of rotation of a body can be changed either by changing the point at which the force is applied or by changing the direction of force applied as shown in figure। पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पिवट है, अगर क्लॉकवाइज हमने फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? वो रुक जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू किया, अब वापस उस पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे या क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे तब वो रुकेगा। एंटी क्लॉकवाइज ही लगाते रहेंगे तो और उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क लगाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज लगाएंगे तो घटेगा और घट के रुक सकता है। ठीक है। ठीक है, नीचे में भी वही चीज दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड ऑल दैट। सो ओके, यस। अभिमन्यु, मैं अभी मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर। तो अभी मतलब इस पे ही ज्वाइन करना है ना वापस? हाँ, इसी पे ज्वाइन करना है। कितना टाइम बाद? अभी 10 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट में ज्वाइन कर लेना। तो मैं 12 बजे आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सर, बाय। बाय।